Hello and welcome to a very special interview with two people who drive Indian hockey at the moment. One, my favorite captain, Harmanpreet Singh. Someone who I've sort of admired, watched, covered, supported for quite some years now. And again, for penalty corners, for short corners, and for more inspiration, we will look to the skipper. And the other, someone I've not yet interviewed, someone who's taken over the reins of Indian hockey, Craig Fulton. Craig, a lot of us will want miracles from you. I know miracles don't happen too often, but coming the Asian Games and Olympic qualification in Paris 2024, a year from now, this country will look to you to deliver some miracles. With the Asian Champions Trophy starting, is it the preparation for the Asian Games that India is looking for? Is the timing right? Are we ready for Paris? Some important questions to ask both of them. Let's go to Coach first. Coach, how happy or disappointed are you with the timing? Is it good preparation? There are always chances of injuries 1 month before a major tournament. How are you looking at the Asian Champions Tour? Yes, morning, Bora. I think the timing is good. The timing is very good. I think there's lots of positives at the moment within the structures of Indian hockey and the team itself. Of course, there was disappointment at the World Cup. It didn't end with the fairy tale ending that everyone hoped. And I suppose now we come in and we try and dissect what happened there and try and make the environment stronger. For whatever reason, these things happen. And I suppose the group is excited again. It's showing some good promise. We're training well. We've had some mixed results of late in the Pro League, but then had a bit more consistency in this last tournament now in Spain. And that bodes well for where we are right now coming into this tournament. Okay. Harman, आप ये बताइए, लास्ट हमें ये जो लास्ट टूर्नामेंट था हमने नेदरलैंड्स को 2-1 से हराया. आपका पर्सनल फॉर्म from the Pro League onwards, say from February after the World Cup disappointment, again back at its best. आप ये कैसे देख रहे हो? क्योंकि नेक्स्ट 3 महीना जो है ये भारतीय हॉकी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एशियन गेम्स में सारे लोग आपसे गोल्ड का उम्मीद करेंगे, ये भी उम्मीद करेंगे कि आप गोल्ड जीतकर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाओ. वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू होगा. हाउ आर यू लुकिंग एट दैट एज कैप्टन हरमन? Craig, I'm sorry I went into Hindi because with the captain, that's a language that always helps me bond better. So apologies for that. Yes, Harman. बिल्कुल भाई. एक्चुअली स्पेन टूर काफी अच्छा रहा है क्योंकि सारी टीमें अच्छी थी और जितने मैचेस हमने खेले हैं तो काफी अच्छे रहे हैं. आई थिंक फर्स्ट मैच जो था हमारा स्पेन के साथ वो हम थोड़ा लैग किए, बट उस मैच में भी देखा जाए तो बहुत सारी पॉजिटिव चीजें थी जो हमने अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं. एंड गोल ऑन शॉट की बात करें तो हमारे ज्यादा थे. एंड आई थिंक बट उसके बाद फिर ड्रॉ देन विन एंड रैंकिंग नंबर 1 की टीम के साथ जीतना आई थिंक बहुत बड़ी बात है. तो आई थिंक वो टीम का कॉन्फिडेंस बिल्डअप करता है. और फॉर द एशियन गेम जैसे पता है कि ये एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के जो मैचेस हैं आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारे लिए कि एशियन टीम के साथ हम एक अच्छे मेजर टूर्नामेंट के पहले, क्योंकि हमें पता चलेगा क्योंकि मोस्टली हम यूरोप की टीम के साथ खेल रहे हैं एंड उनका स्ट्रक्चर की बात करूं टोटली डिफरेंट होता है. तो मेंटालिटी बोलूं डिफरेंट होती है. तो आई थिंक इट्स गुड अपॉर्चुनिटी कि बिफोर द एशियन गेम हमें ये सब कुछ मिल रहा है. और okay. Coach, there's been a lot of debate. I was reading a number of your interviews. Again, the debate has started on the importance of short corners. I was in Odisha for a series of documentaries and had a long chat with Dilip Tirki on it. And again, the focus was on short corners. How important, how relevant, how significant, and you've got one of the best in the world joining in this interview. How important will short corners be, penalty corners be for India? Extremely important. I think it's been part of the game since the beginning. It's just changed in various forms of all the way through to where the ball stopped to now making the ball. I think it's very, you ask people about hockey and they talk about the penalty corner. So it is still very important. It's very relevant. And like you say, we have one of the best in the world. We also have 2-3 other flickers behind Harman that can also flick, which is also a really strong situation to be in. So we
as most of the other teams in international sport, in international hockey, rely heavily on the penalty corner. I mean, a lot of the games we played now in Spain, there were no field goals scored. It was just penalty corner goals, and that shows its relevance still today. अगर ये सेम सवाल मैं आपसे पूछूं, पेनल्टी कॉर्नर आप अभी आप जाने जाते हो इसके लिए वर्ल्ड में, वर्ल्ड कप के बाद अगर मैं देखूं, आई मीन बैक इन ऑन होम सॉइल, क्या होम सॉइल में गोल करने का जो डिमांड होता है उसमें ज्यादा प्रेशर हो जाता है? इज दैट अ प्रॉब्लम ऑन ओकेशंस, या अभी आप इस पे यू आर सॉर्ट ऑफ ओके विद द प्रेशर बिकॉज यू बीन देयर, डन दैट, लेड द टीम फॉर अ व्हाइल नाउ? कैन यू टेल मी टू क्वेश्चंस? वन, penalty corners, how do you keep getting better? Because people will study you with sports science, आपका video analysis होगा, सब कुछ होगा. How do you keep getting better, and that 1% extra can win you a game, right? And how do you deal with home pressure as captain when everyone's expecting a goal from you? Definitely, क्योंकि आप हमेशा आप कंटिन्यूस जो लर्निंग हम बात भी करते हैं टीम में कि आप हमेशा सीखते रहते हो, तो सेम एज ए डायरेक्ट फ्लिकर भी यही माइंड में रहता है कि आप बेटर करते रहें हर बार. एंड ऑफ कोर्स जैसे ओपोनेंट्स हमें लर्न करता है, एनालाइज करता है, तो हमारी भी ऐसे मीटिंग्स में हम भी बात करते हैं कि कौन सा फर्स्ट रशर बेस्ट है, वो कैसे रश करता है, एंड गोलकीपर कौन सी उसकी स्ट्रॉन्ग साइड है. तो वो सारी चीजें एनालाइज होती हैं, तो वो सब चीजों को देख के आई थिंक इम्प्रूव करते हैं हम एज ए डायरेक्ट फ्लिकर. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड सेकंड वन, बिल्कुल सर, काफी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट आई थिंक इंडिया में खेले हैं, चाहे प्रो लीग के मैचेस हो, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे उसके पहले वर्ल्ड लीग हो. वर्ल्ड लीग फाइनल खेले थे हम. एंड बिल्कुल, तो प्रेशर ऑफ कोर्स एक रहता है, बट ऐसा नहीं है कि आपको पेनल्टी कॉर्नर मिला है तो आपके ऊपर प्रेशर है. बट क्योंकि जैसे कोच ने बोला है कि मैं ये डायरेक्ट फ्लिकर नहीं हूँ, बट जितने मेरे साथ वाले हैं, आई थिंक इट्स गुड टाइम टू ओपोनेंट्स को एक सरप्राइज दिया जाए कि क्योंकि मोस्टली जो मेंटालिटी रहती है एक डायरेक्ट फ्लिकर पे रहती है, मैं मानता हूँ इस चीज को, बट उसको आप कैसे एडवांटेज उसका लेते हो, आप वो स्मार्टली आपको कितना एडवांटेज आप उसको उस चीज का उठाते हो, वो आपके ऊपर बहुत डिपेंड करता है. तो इस टूर्नामेंट में आई थिंक वो आप सबको देखने को मिलेगा. एंड जितने भी अदर डायरेक्ट फ्लिकर हैं उनको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा मिलेंगी, एंड ऑफ कोर्स वो भी अपना जो कॉन्फिडेंस है बिल्डअप करेंगे. बट प्रेशर की बात करूँ सर, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी लंबे समय से ये करते आ रहे हैं. हर बार आप बेस्ट नहीं अपना दे पाए हो, पर अब करना चाहते हो बेस्ट, मतलब ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नहीं हो पा रहा है, तो वो सारी आई थिंक स्पोर्ट्समैन के लाइफ में वो चीजें आती हैं. तो आई थिंक कितनी जल्दी आप उस चीज को रिकवर करते हो वो डिपेंड है, rather than उस चीज को सोचते रहो कि क्या हो गया. I agree because sport teaches us how to lose. That is perhaps the far more important life lesson from sport, because वो एक मैच जीतना हारना वो तो होता रहेगा, but how you come out of that, what is the life lesson that you take and how you become a better player and a better human being is what will define the legacy of Harmanpreet Singh. Coach, I was reading in a couple of news reports, you've spoken about some tactical changes in our games. I don't want to probe you more because you might not want to reveal them more, but can you just give me a sense as to what you mean by saying that? It's kind of like saying there's many ways to skin a cat, which is a bit crude, but at the same time, there's many ways to play the game. And you're always trying to play to your strengths. That's in my philosophy and in my experience, the more you can get a group of players and a team with its set identity, that it knows what it's about, that it knows what it's good at. And the more you can get it to play to that, then I think over time, over the process of trying to put it all together, it will be a positive result. So changing tactics, this is what falls in line with changing the way that we defend, changing the way that we try to counterattack. Just a few small changes that I think can have a big impact over time.